Hello friends, I am Udit. I am company secretary and law graduate. I am going to take one of your management subject in FI BCom, and it is structure and process of business. So I would not directly start with subject. Let's be introduced to the subject and then we will get to the subject. So how it will work? Basically, see, if at all you recap 2-3 years back of your, like rather 2 years I would say, that is in 11th standard. Have you heard word business? If you know that it was as a part of term and terminologies. Business transaction you were having. So what was business? So if at all I say business was something wherein there was some certain economic transaction, that I would say, right? So when I say economic transaction, so what does this mean? हमें जब हम ये subject पढ़ेंगे तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि like how the entire subject will work, how it is going to work, what are the segments that this subject is divided into, that we have to see into it. And the most important part is that before we move to the subject, what the entire subject is, we should at least know the history or something known as what is the background behind this subject. ये subject हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं और वो भी क्यों FI BCom में? Why? Because see, ultimately we are a commerce student and we should know how, see, commerce means business. What we are learning from 2 years. You have done in your 11th standard, you have done in your 12th standard. This whole 2 years we have understood only 2 things. That is how you are going to run your business. So run your business includes so many things. One of them is, that is your starting point, the inception of business, means how you are going to start your business. What all are things that you are required in business to start your business. Second most important thing is that after starting your business, how you will run that business. And third most important thing is that once your business is ongoing and you need some growth aspect or something that is known as expansion, you want some expansion. So how you are going to deal with that, or rather how you will expand your business. So what are the steps that you will follow to expand your business? So what I told you right now or just before that, what is business? So business is only one thing that we know. The layman, when you will ask business, then they will say, okay fine, business means ki jai dhando kari raha hai te. But when it comes to commerce, business has certain peripheral, certain definitions, right? So when I say economic transaction, so economic transaction means which is related to money, whether it is directly or indirectly. So when I say there is exchange of good in business, exchange of services in business, this whole things becomes the part of business, whether you say directly or indirectly. Now, when I talk about particular to the subject, or when I move to structure and process of business, which is like our part of our academic program of first year BCom MSc. So how it goes? It goes like this, that the name itself suggests something, right? Structure means something they are talking about foundation of business, right? Foundation means कहीं ना कहीं वो base या fundamental की बात कर रहे हैं कि business हम कैसे खड़ा करेंगे, right? And then they are saying process of business. Process of business means they are saying something when your business is started and then what you are going to do after starting of your business. That is something known as process of business. So this is how it goes. See, now when I ask you one question, like you want to start a business. So what all basic things or basic requirement you need to start a new business? So first of all you will tell, okay, I need some idea, right? Then you need funds, then you need management power, then you need certain services, which is whether internal or external, whatsoever. So this is how our business will go further. So when I say I want idea, so who are going to do that? The person who want to start a business, right? And when I say the person who want to start a business means the person who is carrying an idea, or rather the thought process which is there in his mind. But to execute those ideas, he needs something. And that what I am saying, try to understand, what I am saying, what he needs something, that is something what we are going to learn in this subject, right? Structure and process of business. So see, business is something, we also had some concept called business and owners are different.
So same way, as a human being, we have some different requirements in our day-to-day life. Same way, business also has some day-to-day requirement for their operational activities, for their financial activities, for their core businesses, for their ancillary businesses. Ancillary businesses mean those businesses which are not directly, or which are, I would say, which are not the pure functional factor of business, but something which are additional to that. That is ancillary. So what I was telling you is that, suppose, like as a human being, we require we have certain requirement in our day-to-day life. Same way, business को चलाने के लिए भी कुछ हमें चाहिए. तो कुछ चलाने के लिए उसे हम क्या कहेंगे? चाहे हमें फाइनेंस चाहिए, मैन पावर चाहिए. तो ये जो भी चीज़ है, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड, मैं उसको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि इट इज़ ए मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. एम आई राइट? उससे मैं मैनेजमेंट कह सकता हूँ, हाँ या हाँ. सो जब मैं मैनेजमेंट की बात करूं, तो ये जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताया, वो सब इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है. अब ये जो मैंने आपको बताया, वो ब्रीफ बताया कि दिस इज हाउ द बिजनेस इज गोइंग टू वर्क. बट ये सिर्फ सुनने से बहुत बेहतर लग रहा है, सुनने से बहुत अच्छा लग रहा है, बट व्हेन वी एक्चुअली ट्राई टू एग्जीक्यूट दोज फैक्टर्स, इट इज क्वाइट, आई वुड नॉट से डिफिकल्ट, बट इट रिक्वायर्स सम प्रैक्टिकल स्किल्स टुवर्ड्स दैट. हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इट इज मैनेजमेंट. सो व्हाट आई डिड इज, व्हाट माय प्लानिंग टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट इज दैट आई एम गोइंग टू पुट सम रियल एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? रियल लाइफ एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू, so that you will be able to connect with that. So I don't want something which is very much monotonous. मैं ही कुछ कह रहा हूँ. I know, fine, we are not able to meet at this point of time due to this pandemic, but still I want कि जो भी हमारा सेशन हो, ठीक है, वो इंटरेक्टिव हो काफ़ी. I want certain doubts to be raised, जहाँ पर मुझे पता चले कि आपका थॉट प्रोसेस कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ. एंड मैं ये चाहता हूँ कि मैं ना आगे चला जाऊँ, आप मेरे साथ चलो. मैं चला जाऊँ और आप यहाँ रह जाओ, ऐसा नहीं. मैं कोई भी टॉपिक ले रहा हूँ, यू शुड बी विद मी. कहीं पर भी डाउट आ रहा है, यू शुड आस्क मी. आप मुझे व्हाट्सएप करना, मुझे कहाँ पर भी डाउट है तो यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी. एंड मोर ओवर कि अपना जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली 2 सेगमेंट में बटा हुआ है. एक सेगमेंट ऐसा बोल रहा है कि स्टार्ट कैसे करेंगे बिजनेस, उसको मैनेज कैसे करेंगे शुरुआत में, ठीक है, बिजनेस जब शुरू होता है तब उसको हम कैसे मैनेज करेंगे. देन सेकेंड पार्ट इज कि जब वो शुरू हो गया उसके बाद उसको कंटिन्यू कैसे करेंगे. एंड द डे कम्स इन बिजनेस कि जब आप कुछ साल तक वो बिजनेस को चलाते हो तो आपको पता चलता है कि यार कौन से कंपटीशंस में फेस कर रहा हूँ, कहाँ पर मेरे ड्रॉबैक्स है, क्योंकि आपने इतने साल बिताए. और जब कोई भी फील्ड में या तो आप कोई भी बिजनेस में जब आप कुछ समय बिता देते तो आपको उसके ड्रॉबैक्स, प्रॉस एंड कॉन्स, बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस पता चलता है. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कि मुझे कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, कौन से मैटर में मुझे काम करने की ज़रूरत है, कौन से एरिया में काम करने की ज़रूरत है. तो उसके ऊपर हमें फोकस बढ़ाना पड़ेगा. तो ये जो प्रोसेस है कि हम कैसे फोकस बढ़ाएंगे, कौन से फैक्टर्स है, रादर सब फैक्टर्स है जिसको हम कौन से फैक्टर्स है जिसको हम कंसिडर करेंगे, वो सब चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे. अब जैसे मैं आपको एक बहुत रिसेंट पास्ट का एग्जांपल दूँ. जैसे मैंने आपको एक बोला कि देयर इज बिजनेस को 3 ही चीज़ होता है. एक होता है जब स्टार्टअप होता है तब, सेकेंड इज की ऑनगोइंग प्रोसेस है कि जो चल रहा है बिजनेस, एक उसका साइकिल शुरू हो गया. एंड जब वो एक बोलते हैं ना कि जब वो मैच्योरिटी लेवल पे आता है तब उसको एक कहीं ना कहीं एक कंसिडरेबल अमाउंट का ग्रोथ मिल जाता है. मीन्स कि वो कहीं ना कहीं वो बड़ा, उसको एक इमेज बन जाता है मार्केट में, समझो, या तो फाइनेंशियली समझो, आप रेपुटेशन वाइज समझो, गुडविल वाइज समझो, ठीक है. सो व्हाट आई मीन टू से कि जब बिजनेस इतना बड़े लेवल पे चला जाता है तो यू नीड सर्टेन थिंग्स जो बहुत प्रिसाइज होना जरूरी है. आपके जो भी मैनेजमेंट डिसीजंस होंगे वो बहुत शार्प होने जरूरी है, ठीक है. यू हैव टू बी सो एक्यूरेट इन डूइंग दैट. और जब आप वो मैनेजमेंट, जब आप हायर अथॉरिटीज और जो मैनेजमेंट की जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज होती है, वो जब कुछ भी डिसीजन लेती है तो वो बहुत सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देखती है. इम्प्लीकेशन मीन्स कि वेदर उसका प्रैक्टिकलिटी कितना है या नहीं है, और है तो कितने हद तक है. तो ये सब जब रिक्वायरमेंट पता चलता है, बिजनेस को पता चलता है कि हमारे पास फंडिंग की ज़रूरत है, या तो हमें कोई अच्छे टेक्नोलॉजी पार्टनर की ज़रूरत है, या तो हमें इनोवेशन की ज़रूरत है, कुछ आगे रिसर्च करने की ज़रूरत है. जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट एप्पल ऑलवेज कम विद सम रिनोवेशन और समथिंग इनोवेशन और रिसर्च. अच्छा रिसर्च करके आता है, अच्छे प्रोडक्ट्स निकालता है, अच्छे आईफोन्स निकालता है. सेम में जब कोई बिजनेस होता है उसका एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है कि अभी उसको किसी को साथ में ज्वाइन करना पड़ेगा,
तब जाके वो आगे ग्रो कर पाएगा। वरना एक लेवल आ जाता है कि ओके फाइन, अब यहाँ तक हम लिमिट तक आ चुके हैं, उससे आगे जाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है। तो इसके लिए हम किसी को कोलैबोरेशन में लाते हैं, और जब हम किसी को कोलैबोरेशन में ला रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है वो हम ये सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। जब मैं ये सब्जेक्ट की बात करूँ सिंपल वे में, तो हमें सिर्फ 3 ही चीज़ देखना है। बिजनेस कैसे शुरू हो रहा है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, उसको हम कैसे आगे लेके जाए, और जिस दिन वो आगे बढ़ गया तो आगे बढ़ने के बाद अगर उसको मुझे और एक्सपेंड करना है, मान लो, या तो मुझे कुछ एक अलग लेवल, मतलब मेरा जो एक बेंचमार्क सेट था मेरे बिजनेस का कि मैं इतना ये लेवल पे मैं काम करता हूँ, सपोज मुझे वो उससे वो स्टैंडर्ड मेरा बढ़ाना है, तब जाके मैं सोचूंगी कि क्या मुझे किसी की ज़रूरत है, क्या मुझे एक्सटर्नल रादर जो दूसरे बिजनेसेस है या तो मेरे रिलेटेड, मतलब कि जो सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ उसकी जो कंपनीज है, मतलब रादर की सपोज आई एम द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट, आई हैव सर्टेन ब्रांड, और मैं चाहता हूँ कि अभी मैं कुछ इनोवेशन लाऊं मेरे प्रोडक्ट में, तो आई थॉट कि आई शुड join up with some Vivo or MI because they are coming up with so much of good products, right? Even there is one initiative in our country that is Make in India. So I would support in that way and I would start my business in that way. Rather I would carry my further business in that way. So now ये चीज़ आप समझ गए कि 3 सेगमेंट में हमारा ये बटा हुआ है। अब बात रही पर्टिकुलर कि हमारे मतलब हाउ वी आर गोइंग टू लर्न एंड हाउ व्हाट वुड बी दी आवर पैटर्न टू फॉलो व्हेन वी आर स्टडिंग, एंड बेसिकली राइट नाउ वी आर गोइंग विथ वीडियो लेक्चर्स। सो आई थिंक आई वुड मेक इट क्लियर टू यू कि जैसे ही मेरा सेशंस खत्म होता है, ठीक है, सो आई एम गोइंग टू कंडक्ट सम डाउट सेशंस, पोस्ट 3 और 4 लेक्चर्स और 5 लेक्चर्स, जैसे मुझे लगता है कि हाँ कहीं पर भी यहाँ पर डाउट है स्टूडेंट्स को ज़्यादा, सो देन आई विल intimate you well advance, and बाकी you have any questions you can let me know post this, जैसे आप ये lecture visit करते हो, कुछ भी आपको है, you have some you want to ask some questions in particular to this subject, so I will get back to you, and I would request that okay fine, a little bit you are late, but we will cover up in a very good way, and आई होप कि आप सब लोग डे टू डे मेरे साथ प्रिपरेशन करेंगे, जो मैं करवा रहा हूँ वो साथ में लेके चलेंगे। ऐसा ना हो कि मैं आगे करवाता जा रहा हूँ और आप उसको प्रोकास्टिनेट करके डिले करते जा रहे हो। दिस शुड नॉट हैपन बिकॉज सी अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू वॉच वीडियो एंड यू माइट थिंक कि वीडियो तो पड़ा ही है यूट्यूब पे, तो मैं उसको बाद में देख लूँगा, बट नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज टाइम इज़ पासिंग एंड द डे विल कम, सब सब्जेक्ट आपके साथ हो जाएंगे एंड फिर आप कवर अप करना मुश्किल हो जाएगा, एंड देन यू हैव टू जस्ट करना पड़ेगा ऊपर से, एंड आई डोंट वांट दैट। हमारा सेशन होगा वो पूरा इंटरेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ एंड आप सिर्फ सुन रहे हो। ऐसा ही मतलब थियरी सब्जेक्ट है लेकिन हम उसे थियरी की तरह नहीं पढ़ेंगे। व्हाट आई मीन टू से इज ऑलराइट, सो स्टे होम, स्टे सेफ, घर बैठे पढ़ो, एंड आई होप कि हम जो भी आगे हमारी जो जर्नी रहेगी वो बहुत अच्छी होगी, एंड वी विल वर्क ऑन दैट एंड ऑनेस्टली काम करेंगे। यू बीइंग ए स्टूडेंट यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन वॉट एवर प्रिपरेशन यू आर डूइंग। सी बीकॉम है तो ये नहीं है कि हाँ बीकॉम है तो एवरीथिंग चलेगा, यू हैव टू ऑल्सो वर्क ऑन दैट। बीकॉम की मेहनत मांगेगा लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून एंड सी यू इन टुमारो सेशन, बाय।